subject Environmental Studies. Yes, in EVS we had started our chapter number 3, Plants Around Us. After completing chapter number 1, My Home, chapter number 2, My School, we had started our new chapter, chapter 3, Plants Around Us. Yes, so plants around us में हमने क्या पढ़ा? Yes children, first of all we had studied our main parts of the plant. Which were they? Yes, root, stem, leaf and flower. Right? सब प्लांट्स में ये 4 मेन पार्ट्स होते ही हैं जो हमने डिटेल में पढ़े. राइट? After that you learned the uses of plants, how plants are helpful for us. Plants give us medicines, plants give us eraser, rubber, they give us gum, wood, fruits, vegetables and many more things, right? Many birds and many animals live on trees, right children? Yes. So we had learned the uses and importance of plants, right? After that we had learned that there are number of plants. Some are big, some are small, right? The plants which are very tall, strong and straight are known as trees. Right children? जो plants बड़े होते हैं, strong होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Trees. क्या कहते हैं? Trees. We had also learned the examples of the trees. Which were they? Yes, neem tree, mango tree, banyan tree, coconut tree, sal tree and many more. Right? Yes. After trees, what you had learned? Yes. See, not all plants are big. ठीक है, सारे प्लांट्स जो है वो बड़े नहीं हो सकते, कुछ प्लांट जो है वो छोटे भी होते हैं. राइट? So the small plants with hard and woody stems are known as shrubs. Right? हमने previous video में पढ़ा that the plants which are small and are very bushy and have many branches are known as shrubs. In short, hard and woody stems, the plants which have hard and woody stems are known as shrubs. The examples of the shrubs also you had learnt. Which were they? Yes, rose, hibiscus, cotton. Right? इन तीनों एग्जाम्पल के बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. And in today's lecture we are going to discuss about herbs. Okay, in today's video we are going to discuss about herbs and creepers also. Okay, see you have learned that बड़े पेड़ जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसे ट्रीज कहते हैं और जो छोटे प्लांट्स होते हैं विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर नोन एज shrubs. And what are herbs? The plants which are weak and soft are known as herbs. ठीक है, जो प्लांट्स छोटे होते हैं बट उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है और सॉफ्ट होती है. श्रब्स में आपने क्या पढ़ा कि जो उनकी स्टेम है वो थोड़ी वुडी एंड हार्ड. ठीक है, एंड इन हर्ब्स व्हाट यू आर लर्निंग दैट द प्लांट्स विच आर हैविंग सॉफ्ट स्टेम. ठीक है, सॉफ्ट एंड वीक स्टेम आर नोन एज हर्ब्स. So, what are the example of the herbs? Let's learn in detail. First example is grass. Grass, grass. अगर आप कहीं गार्डन में गए होंगे तो आपने ग्रास देखे होंगे. राइट? द ग्रास इज वेरी सॉफ्ट. अगर आप कहीं गार्डन गए होंगे तो आपने देखे होंगे ग्रास. राइट? दे आर वेरी सॉफ्ट. राइट? एंड अगर आप ऐसे तोड़े तो जल्दी टूट भी जाते हैं. दैट मीन्स दे आर वीक. राइट चिल्ड्रन? Yes, so grass is the example of the herb. अगर आपके घर में भी छोटी सी ऐसे फार्म एरिया हो या गार्डन एरिया हो वहाँ पे भी आप ग्रास ग्रो कर सकते हो. वॉकिंग ऑन द ग्रास इज हेल्पफुल फॉर अवर लेग्स. ओके, पैरों के लिए, आँखों के लिए ग्रास पे चलना बहुत अच्छा होता है. ओके चिल्ड्रन? यस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुलसी. Tulsi. Tulsi is a holy plant, right? तुलसी अगर आपके घर में होंगे तो आपने देखा होगा मम्मा डूज पूजा ऑफ इट. राइट? सो तुलसी इज अ होली प्लांट.
सी चिल्ड्रन, तुलसी जो है वो बहुत ही हेल्पफुल प्लांट है. तुलसी relieves our headache. It also keeps our eyes healthy. It promotes a healthy heart. It is a rich source of vitamin C. It also helps in relieving the fever. Yes children, जब आपको बुखार होता है तो आपने देखा होगा मम्मा मेक्स काढ़ा. सो दैट काढ़ा वो किससे बनता है? तुलसी एंड मैनी मोर थिंग्स. सो तुलसी इज द मेन इंग्रेडिएंट. ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स in treating kidney stones. Okay children, so tulsi is very important plant for us and it is also a holy plant. Okay, now come to the next example, which is mint. 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 mint मतलब पुदीना, जिसे आप हिंदी में पुदीना कहते हैं. राइट. सो पुदीना आपने देखा होगा. Mama makes tasty chutneys and all the herbs are also useful in the kitchen work, right? So mint. Mint is rich in nutrients. Yes children, mint also improves our brain function. It also decrease and improves our cold symptoms. After that, it may mask bad breath. Okay, and it is very easy to add in your diet, right? So these are the main example of the herbs: grass, tulsi and mint. There are many other example of the herbs like wheat, paddy, cabbage, tomato, mustard, radish, sunflower, carrot, ginger and turnip. Yes children, so these all are the herbs which can be used in our kitchen, and as well as it is also helpful in making medicines. ठीक है, इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है और वो किचन वर्क मतलब हमारे खाने में भी यूजफुल होते हैं herbs. Okay, so the plants which are soft, that means the stem is soft and weak, are known as herbs. Okay children, now next is creepers. Next is creepers. Creepers. So what are creepers? Let me tell you. आपने पढ़ा कि जो plants बहुत बड़े बड़े होते हैं उसे trees कहते हैं, and the plants which are short and have woody stem, hard and woody stem, that are known as shrubs, and the plants which have soft and weak stem are known as herbs, right? After that, सारे प्लांट्स ऐसे स्ट्रेट ग्रो नहीं हो सकते. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे जमीन पर ग्राउंड पर भी ग्रो होते हैं. ठीक है, उनके ऐसे पेड़ ऐसे स्ट्रेट नहीं होते बट ऐसे ग्राउंड पे वो ग्रो होते हैं. ठीक है, सम प्लांट्स आर वीक, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्रीपर इज पम्पकिन. क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट? पम्पकिन. PUMPKIN, पम्पकिन, जिसे आप हिंदी में कद्दू कहते हो. राइट, कद्दू की सब्जी तो सबने खाई होगी. यस, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पम्पकिन. सो हाउ पम्पकिन इज हेल्पफुल टू अस? लेट अस सी. चिल्ड्रन, अगर आप पम्पकिन खाओगे तो आपकी जो आईसाइट है वो शार्प रहेगी. Pumpkin gives us rich source of vitamin A. It also helps you to boost your immunity. Right? Immunity is most important in today's time. Right? And it also trims your tummy and helps you to take a good sound sleep. Okay? So these are the uses of pumpkin. Other examples of creepers are money plant and strawberry. मनी प्लांट तो आई नो सबके घर पर ही होगा. एंड नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी जो आप खाते हो फ्रूट, आई नो इट इज अ वेरी हेल्दी एंड टेस्टी फ्रूट. राइट, सो स्ट्रॉबेरी ऑल्सो ग्रोज ऑन द ग्राउंड. ओके चिल्ड्रन, yes, so in today's environmental studies lecture we have learned about herbs and about creepers. Okay, so
the basic thing which we are learning in this chapter is about plants. Plants बहुत ज़रूरी है, हमें हमारे आसपास जितना हो सके plants grow करना चाहिए, right? Plants give us oxygen, plants give us food to eat, plants help us in various other ways, right? So the big and strong plants are called trees. The plants which are small and having hard and woody stems, that are known as shrubs, and the plants which have small, weak and soft stems are known as herbs. After that, creepers, the plants which grow along the ground. They do not stand straight. Okay, वो ऐसे straight नहीं grow होते. They grow along the ground are known as creepers. We have seen examples of trees, shrubs, herbs and creepers, right? And now we will meet in our next environmental studies lecture. In that lecture we will study about climbers, and the plants grow different in different seasons. Different plants grow in different seasons. We will learn that part. Okay? Till that, keep practicing. Stay home. Stay safe. Bye-bye.